हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एड्यू स्टूडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर उसके टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर रहे हैं। फर्स्ट इसका जो है तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो को फ्रेंड्स स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो मैं आपको इन डिटेल पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू ए पार्टनरशिप। ओके, सो इसके चार आपको ऑप्शन मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, विथ द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ओके, सो इसके चार आपको जो है मल्टीपल आंसर्स मिले हुए हैं, चॉइसेस। ओके, सो इसमें जो राइट चॉइस है, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसोल्ड। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/2. They admit C as a partner by giving him 1/3 share in future profits. Okay, the new ratio will be, okay, CS Foundation December 2012. Okay, तो इसके आपको चार ऑप्शन मिले हुए हैं ए बी सी डी में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, नॉन ऑफ द एबोव। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3/2. Z was admitted with 1/4 share in profits which he acquires equally from X and Y. The new ratio will be, okay. So the right answer is B, option B. Okay, question number 5 friends, A and B share profits in the ratio of 2:1. Okay, C is admitted with 1/4 share in profit. C acquires 3/4 of his share from A and 1/4 of his share from B. The new ratio will be, okay. So the right answer is option B. Okay, question number 6 है friends, B and N are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3/2. They admit S as a partner of 1/4 share in the profits. S acquires his share from B and N in the ratio of 2/1. Okay, the new profit sharing ratio will be, okay. So the right answer is option D. Okay, question number 7 है friends, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 7/5. They agree to admit C, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the profits. He acquires this share as 1/24 from A and 1/8 from B. The new profit sharing ratio will be, okay. So the right answer is option A. Question number 8 friends, A and B share profits in the ratio of 3/2. They agreed to admit C on the condition that A will sacrifice 3/25 of his share of profit in favor of C, and B will sacrifice 1/25 of his profits in favor of C. The new profit sharing ratio will be, okay. So friends, the right answer is option C. Okay, सो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो एग्ज़ाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये जस्ट आपके सैम्पल क्वेश्चंस है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो फ्रेंड्स, इनको लर्न ज़रूर कीजिए, अपने बेस पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए firm sharing profits and losses in the ratio of 3/2. A new partner C is admitted. A surrenders 1/15th share of his profit in favor of C, and B surrenders 2/15th of his share in favor of C. The new ratio will be, okay. So the right answer is option B.
Okay, question number 10 friends. A and B are partners sharing profit or loss in the ratio of fourth by 1. A surrenders 1/4 of his share and B surrenders 1/12 of his share in favor of C. A new partner vote will be the C's share. ओके, अकाउंटेंसी MCQ. ओके, ये तो इसका हो गया. ओके, इसका जो आंसर डी था. ओके फ्रेंड्स, सो बाय मिस्टेक यहाँ पे जो है इसके जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं वो जो है बाय मिस्टेक नहीं आए. ओके, सॉरी फॉर देट. और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. ऐसा हो तो फ्रेंड्स आप इसका जो रिजोल्यूशन आपके नोटबुक में राइट डाउन करके इसका सॉल्यूशन आप निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स. और इसका जो सारा डिटेल्स है, ये जो इस वीडियो का सारा डिटेल्स है और ये जो डिटेल वाइज जो क्वेश्चन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. वहाँ पे जाके आप जो है ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. A and B are partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 7/3 respectively. They admit C as a new partner. A sacrificed 1/7 share of his profit and B sacrificed 1/3 of his share in favor of C. The new profit sharing ratio of A, B and C will be. C's foundation June 2013. Okay, so the right answer of this question is A. Okay, question number 12 है friends. A and B are partners sharing profit or loss in the ratio of 3/2. C is admitted into partnership as a new partner. A sacrifices 1/3 of his share of B sacrifices 1/4 of his share in favor of C. What will be the C's share in the firm? Okay, ओके, इसका राइट आंसर जो था वो सी था. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2/3. C is admitted for 1/5 share in the profits of the firm. If C gets it wholly from A, the new profit sharing ratio after C's admission will be. Okay, so the right answer of this question is option D. Okay, question number 14 friends. A and B are partners sharing profits in the ratio of 4/3. They admitted C as a new partner who gets 1/5 share of profit entirely from A. uh, the new profit sharing ratio will be. Okay, so the right answer is option C. Question number 15 friends. A, B, C, D are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 9/6/5. E joins the partnership for 20% share. A, B, C, D would in future share profits among themselves as 3/10, 4/10, 2/10, 1/10. The new profit sharing ratio will be. Okay, so the right answer is option C. Okay. Okay, next question है friends. A and B are in partnership sharing profits and losses as 3/2. C is admitted for 1/4 share. Afterwards, D enters for 20 paisa in the rupee. The new profit sharing ratio after D's admission will be. ओके, सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स. द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज. ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओल्ड शेयर न्यू शेयर. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3/2. Z is admitted as a partner. Calculate sacrificing ratio in new profit sharing ratio is 9/7/4. Okay, so the right answer is A. ऑप्शन ए है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 5/3. A surrenders 14th of his share and B surrenders 15th of his share in favor of C. A new partner, what is the sacrificing ratio? Okay, so the right answer of this question is option D. Okay,
क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 11/4. सी वॉज एडमिटेड. ए सरेंडर्ड 111th of his share and B 14 of his share in favor of C. The sacrificing ratio will be. Okay, so the right answer is option B. Okay. Question number 21 है friends, P and Q are partners sharing profits in the ratio of 9/7. R is admitted as a partner with 9/20th share in the profits, which he takes 15th from P and 14th from Q. Sacrificing ratio will be. Okay, so the right answer of this question is option D. Okay. Question number 22 है friends, A, B and C are partners sharing in the ratio of 5:3. They admit D for 17th share. It is agreed that B would retain his original share. Sacrificing ratio will be. Okay, so the right answer of this question is option D. Okay. Okay, question number 23 है friends, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 5/4. C is admitted for 15th share. A and B decide to share equally in future. Sacrificing ratio will be. Okay. So the right answer is option C. Question number 24 the friends, A and B are partners. They admit C for 13th share in future. The ratio between A and B would be 2/1. Sacrificing ratio will be. Okay, so the right answer is option D. Okay. अभी फ्रेंड्स ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टाइप के जो है वो इसमें क्वेश्चंस हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग profits and losses as 2/1. C is admitted and profit sharing ratio becomes 4:3:2. Goodwill is valued at rupees 94,500. C brings required goodwill in case. Goodwill amount will be credited to. Okay, so the right answer is option C. Question number 26 friends, X and 7 are partners sharing profits and losses in the ratio of 3/2. They admit Z into partnership with 15th share in profits, which he acquires equally from A and Y. Z brings in rupees 40,000 as goodwill in case. Goodwill amount will be credited to. Okay, so the right answer is option A. Okay friends, question number 27 है, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3/2. C is admitted into partnership for 15th share in profit. He pays rupees 1 lakh as goodwill. The ratio of the partners A, B and C in the new firm would be 3:1. Goodwill will be credited to. Okay, so the right answer is option B. Okay. Question number 28 friends, A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2/1. C is admitted as a partner. A and B surrender 12 of their respective share in favor of C. C is to bring his share of premium for goodwill in case. The goodwill of the firm is estimated at 60,000. Credit will be given to. Okay, so the right answer is option D. Okay, question number 29 friends, P and S are partners sharing profits in the ratio of 3/2. R is admitted with 15th share and he brings in rupees 84,000 as his share of goodwill, which is credited to the capital accounts of P and S respectively with rupees 63,000 and rupees 21,000. New profit sharing ratio will be. Okay, so the right answer is option B. Okay friends, question number 30 है, partners A, B and C share the profits of a business in the ratio of 3:1 respectively. They admit D, who brings in rupees 60,000 for his share of goodwill. ABC and D decide to share the profits respectively in the ratio of 5:3:2. Okay, credit will be given to. Okay, so the right answer is option D.
Question number 31 है friends. A and B are partners sharing profits and losses as 2:1. C and D are admitted and profit sharing ratio becomes 3:4:1. Goodwill is valued at rupees 90,000. C and D bring required goodwill in case credit will be given to. Okay, so the right answer is C. Question number 32. A and B are partners sharing profits and losses in 3/2. They admit C into partnership for 3/30th share in the profits. A surrenders 13th of his share and B surrendered 14th of his share in favor of C. Goodwill of the firm is valued at rupees 3 lakh, but C is unable to bring his share of goodwill in case credit will be given to. Okay, right answer है friends option B. Okay, question number 33 है friends. A and B are partners sharing profits in the ratio of 7/5. C is admitted into the partnership for 16th share, which he acquires 1/24th from A and 18th from B. C does not pay anything for his share of goodwill. On C's admission, firm's goodwill was valued at rupees 1,80,000. Credit will be given to. Okay, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स. X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 5/3. They admitted Z as a new partner. The new profit sharing ratio will be 4:3:2. The firm's goodwill ratio will be 4:3:2. The firm's goodwill on Z's admission was valued at rupees 1,26,000, but Z could not bring any amount of goodwill in case credit will be given to. Okay, so the right answer is option C. Question number 35 friends. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3/2. They admit C into the partnership with 14th sharing in future profits. The new profit sharing ratio is 5:4:3. The firm's goodwill on C's admission was valued at rupees 1,44,000, but C could not bring any amount for goodwill in case credit will be given to. Okay, so the right answer is option D. Question number 36 friends. P, Q and R share profits in the ratio of 5:3:2. S is entitled for 15th share in profits, which he acquires equally from P, Q and R. Goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchased of last 4 years profit, which are rupees 50,000, rupees 60,000 minus rupees 30,000 and 40,000. S cannot bring his share of goodwill in case credit will be given to. So the right answer is option B. When a new partner brings his share of goodwill in case the amount is debited to. So the right answer is option C. So इस टाइप से फ्रेंड्स आपको पूरे जो है क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में. ये सिंपल क्वेश्चन है एज वेल एज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स. ओके, तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 38 का जो है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी है. ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 39 का जो है ऑप्शन है वो सी है, राइट है. क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन आंसर जो है ए है, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 41 का है आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर ए है. क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर सी है. क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बी है. एंड क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बी है. क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ए है. ओके, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सी है. क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर डी है. क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर ए है. क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है सी. एंड क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है सी. सो फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली अभी आपको आंसर ही बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो है
वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स, इस टाइप से आपको एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो है आंसर आपको कोई भी जो है मल्टीपल, आपको इसके मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगे, उसमें से राइट आंसर जो है मल्टीपल चॉइसेस में से राइट ऑप्शन आपको चूज़ करके नोट डाउन करना है। सो फ्रेंड्स, इस टाइप से जो है ये आपको डिटेल वाइज हमने बताया है। आई होप फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।